A very warm good evening to all the health lovers. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. I request all of you to have a good focus because we are going to cover a very important topic about our own body. खुद के body के बारे में जानना बहुत जरूरी है. So as all of you know that we are going to talk about the anatomy and physiology of knee. घुटने की anatomy, I mean structure and physiology, that means the function. क्या होता है, कैसे होता है, कितने तरह के नी प्रॉब्लम्स होते हैं और क्या क्या सॉल्यूशंस हैं इन योगिक थेरेप्यूटिक हीलिंग के थ्रू. So I am a yogic therapeutic healing practitioner. So I'll be teaching you few of the exercises and asanas at the interval station which are general in nature, but to be very specific, अगर किसी को specific healing चाहिए, that specific exercises are required. So, the biggest problem in India, which I hate our country, is the people don't value the time. So if 8:30 means 8:40, 8:50, 9 o'clock, people think like this. So keeping all those things away, we all are punctual, and I really congratulate all of you for being in time and present in the session. Okay, so the topic of today's webinar is no knees, no pain. अगर आपको अपने घुटने के बारे में जानकारी है कि आपका घुटना कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो कैसे खराब होता है, किस चीज की कमी से खराब होता है, तो शायद आप उसकी केयर अच्छे तरीके से कर पाएंगे. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने कोई पेड़ लगाया है. आपको अगर पता है कि पेड़ में कौन से मिनरल्स, कौन से विटामिन, कौन से केयर करने हैं, तो आपका पेड़ अच्छे तरीके से बड़ा होगा. इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द ट्री, what kind of fertilizer, when water is required, how much water is required, तो आपका पेड़ जल्दी सूख जाएगा. तो बिल्कुल हमारा घुटना जो है बिल्कुल वैसा ही है. एंड नी जॉइंट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ द एंटायर ह्यूमन बॉडी. मोस्ट कॉम्प्लेक्स. And the most complex replacement of any joint is the knee joint, knee replacement, which costs around 50 to 60 lakhs rupees. Can you believe that? Knee replacement. And do you know the success rate? 1%. The success rate of knee replacement is 1%. अगर आपने घुटने का ऑपरेशन करा भी लिया तो सक्सेस होने के केवल 1% चांसेस. डिपेंड्स अपॉन कितना डैमेज हुआ है आपके घुटने. So the first thing that we must know is to not ignore any knee pain. छोटा सा भी knee pain है, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, अगर आपके शरीर में if it is existing, then you have to be very, very serious. The problem with we Indians are we keep ignoring the things. We keep our eyes closed. नी पेन हो रहा है कितने दिनों से? 4 सालों से, 5 सालों से. क्या किया? कुछ नहीं. I have not taken any step. So why you are ignoring your body? So it is not about yourself, but in and around, in your surrounding, if anyone is suffering of knee pain, you are supposed to make them aware. And this is what you are here in the session. Okay, so those who do not know me, I'll just give a brief introduction that I am a yogic practitioner, naturopath advisor, yoga and meditation expert, and therapeutic healing expert. So we are going to start with anatomy of knee. पूरे घुटने के अंदर, if you talk about the complete knee, then there are 3 bones attached. पूरे घुटने के अंदर 3 bone होते हैं. Upper one is called as the femur, which is the thigh bone. This is the thigh. And the lower bone, which is having a shin and a calf muscle, is called as tibia. If you have a pen and a paper, you must make a note of this.
for the enhancement of your general knowledge. And the kneecap, this is the kneecap. घुटने में जो कटोरी लगी है, that is called as patella. And the side bone is called as fibula. अगर आप घुटने पैर के इनर साइड में आप देखेंगे तो नीचे आप एक छोटी सी हड्डी निकली होती है जस्ट बिलो द एंकल, उसी हड्डी से आपका ये फिबुला कनेक्टेड होता है आपके नीज में. ओके, सो नी फिबुला हैज नो रोल इन द नी जॉइंट, इट इज अ सेपरेट पार्ट. Okay, so mainly there are three bones which altogether makes the knee joint: femur, patella, and tibia. Okay, so at any point of time, if you have any doubt, please let me know. I'm going to explain each and everything in very simple manner so that you can understand. Now, when we cover all the three bones, what we saw with a capsule, it is called as knee joint capsule. So these are the muscles, white color muscles. They are framing the outer part of the knee, and inside this capsule, the liquid is filled. The name of the liquid is synovial fluid. Synovial fluid, which is taking care of the lubrication of your knee joint. कोई भी चीज अगर मूव कर रही है और उसमें लुब्रिकेशन नहीं है तो वो घिस जाएगा. जैसे कि आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल के चेन में आपको तेल डालना पड़ता है बिकॉज इट इज मूविंग. नहीं डालेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा, फिर भी नहीं डालेंगे तो सूख जाएगा, टीयर हो जाएगा. So synovial fluid is a thick fluid which is filled in this capsule. तो नी पेन का एक कारण ये भी होता है कि साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया. तो कैसे जनरेट किया जाए साइनोवियल फ्लूइड? देयर इज नो सच टेक्नोलॉजी डेवलप्ड कि आप बाहर से कोई साइनोवियल फ्लूइड मैन्युफैक्चर नहीं हुआ आज तक. The scientist could not develop this synovial fluid कि आप इंजेक्ट कर दो अंदर और synovial fluid आपका बढ़ जाएगा. Now coming to the internal anatomy of the knee. So the upper part, which is femur, and the lower part, which is tibia, both are joined through femoral condyles. Okay, so this white color are called as femoral condyles, and the lower part is the tibia. Tibia is having two kinds of cushioning. One is tibial plateau. This is left plateau and this is right tibial plateau. The inner one, I mean the left one, is called as medial and outer one is called as the lateral. तो पूरे नी सिस्टम के अंदर जितने भी पार्ट्स आएंगे, अगर हम लैटरल कह रहे हैं तो वो आउटर है और मीडियल कह रहे हैं तो वो इनर है. That you have to understand. Okay, so now you understand one more thing, that this is tibia, and at the top of the tibia we have tibial plateau, and on the plateau we have meniscus. This is tibia. Okay, and this lower one here you can see your tibial plateau is shown, and this is meniscus, जिसे हम कटोरी कहते हैं. इसी के ऊपर हमारा जो फीमर है ये रोटेट करता है. Okay, so this white color is called as the ligament, which acts as a cushioning. So whatever we have seen here, this ligament. Okay, the top ligament and the femur and the bottom ligament on the tibia. Okay, so now let's go ahead. We have understood about plata, about femur, about tibia,
and the ligaments. Now we are going to understand side and the front and back ligaments. तो अब चूंकि यहाँ पे सपोर्ट के लिए ऊपर और नीचे दो हड्डियों को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए कि साइड मूवमेंट बंद हो जाए, हमारे घुटने साइड में छटक ना जाए और फिर सामने की तरफ ना छटक जाए. तो ऑल टुगेदर वी हैव 4 टाइप ऑफ लैटरल एंड लॉन्डिट्यूडनल लिगामेंट. ओके, सो एज आई सेड कि लैटरल है तो बाहर वाला है और मीडियल मतलब अंदर वाला. ओके, so this ligament is lateral collateral ligament, LCL. तो जब जिनका घुटना खराब होता है, जब आप एमआरआई के अंदर जाएंगे तो एमआरआई के रिपोर्ट में आपको बताया जाता है कि आपका एलसीएल घिस चुका है या एमसीएल घिस चुका है. एलसीएल और एमसीएल. एलसीएल इज लैटरल मीन्स आउटर एंड मीडियल मीन्स इनर. ओके, सो what is the function of LCL and MCL? It will stop the sideways slipping of the knees. तो जिनका ये लिगामेंट क्रैक हो जाता है, टीयर हो जाता है, वियर एंड टीयर हो जाता है, तो ये घुटना इधर से सरक करके कुछ इस तरह से इस तरफ में आ जाता है. इस तरफ आ सकता है, इधर का घिसा है तो इस तरफ ये छटक सकता है. Okay, so once the ligaments are teared, fractured, very difficult to repair them. Now coming to ACL, anterior cruciate ligament. Anterior cruciate ligament. तो ये हमारा फ्रंट पोर्शन ऑफ द नी है, सामने वाला. तो यहाँ पे ऊपर वाले फेमर से लेके टीबिया तक के बीच में ये एक लिगामेंट कनेक्टेड है जो कि हमारे फीमर को पीछे आने से रोकता है. सो दैट इज कॉल्ड एज ACL. और पीछे से अगर देखें बैक ऑफ द नीज, देन वी हैव वन मोर लिगामेंट व्हिच इज कनेक्टेड फ्रॉम टीबिया टू फीमर, दैट इज कॉल्ड एज PCL. पोस्टीरियर. पोस्टीरियर मतलब पीछे, एंटीरियर मतलब आगे. ओके, पोस्टीरियर मीन्स पीछे, एंटीरियर मीन्स आगे. तो ये पीछे वाला लिगामेंट है, दैट इज कॉल्ड एज PCL. Okay, so now we have understood all 4 kinds of ligaments. Okay, let's revise again. One is called as LCL, MCL, that keeps the knees intact and stop them sliding to the right and left. Whereas ACL and PCL keeps the knees intact to go and slip from forward and backward movement. Okay, see how complicated the structure is and how nicely designed by Almighty. So now if we combine all the parts of the knees together, then we have understood about femur. Femur is the thigh bone, upper part of the knee. Then we have seen articular cartilage. Articular cartilage in the femur. Then we have seen meniscus, that is the katori on the tibia, bowel, on which this articular cartilages are moving. Then we have seen lateral collateral ligament, LCL. Then we have seen ACL, anterior cruciate ligament. We have seen articular cartilage again, this one. Then MCL, medial collateral ligament, meniscus to other side, and posterior cruciate ligament, PCL. Okay. Now, these are the muscles, quadriceps, which the muscles are connected to the bone. How the muscles are connected to the bone? That is, they are called as quadricep muscles. That is the femur muscles. आपके थाई के नीचे वाला मसल आगे की तरफ, they are called as quadricep muscles. So that's the complete system of the knee. Now, I would like to ask if anyone having any doubt, any curiosity, anything to add. Because I have explained about all the parts of the knees. Either it's absolutely clear or bilkul bhi clear nahi.
If anybody understood, please let me know that you understood. Yes, sir. Clear, sir. Okay. I hope you are noting down because it is going to help you out in understanding the anatomy and you can suggest other people also. Okay, so let's go ahead. Now, we are going to see that how the muscles are attached to the bones. How the muscles are attached to the bones. So the top muscles, when attached to the femur, are called as quadriceps tendon, and the lower muscles are called as patellar tendon because they are connected to patella. Patella है हमारी कटोरी जो है center में. So the muscles are called as patellar tendon and the top one called as quadriceps tendon. Okay, now if we look at the back side of the thighs, पीछे की तरफ अगर हम knees को देखें तो ये हमारा hamstring है. The back thigh of back muscles, they are called as hamstring muscles, and bottom one, which are connected to tibia, are called as hamstring tendons. Now coming to the nerves and the tissues. So we have a main nerve which is coming from the backbone. This nerve is called as sciatic bone. इस बोन में अगर ब्लॉकेज होता है तो आपको sciatica हो जाता है. Now this bone, sciatic bone, when coming down is divided into two parts, tibial nerve and common peroneal nerve. ये कहाँ जाता है? These are going to the feet, flat feet, and all the 5 fingers carrying the sensation from the mind. Mind से जितना भी sensation होगा वो इसी sciatic nerve followed by tibial and common nerve से होते हुए आपके पैर में जाएगा. Okay, so if the people who are having a sciatica, they are having a blockage in this sciatic nerve. The sciatic nerves are in both the legs, left and right. They travel up to the knee in just one single nerve, further divided into many branches, ultimately finishing into 5 branches connected to 5 toes, thumb से लेके little finger तक. Now coming to the blood tissues. So 2 types of nerves are coming. One is the input and other is the output. They are called as artery or the veins. One sends the blood and from the other, the blood goes back to the heart. Okay, so let us see the video. Okay, so this is the palata which I was talking about. Okay, so these are the ligaments. Earlier they were white in color, but because of the lack of synovial fluid, they have deteriorated. उन्हें proper nutrition नहीं मिला, liquid सूख गया, so they will start degenerating. धीरे धीरे वो सूखने लगेंगे. So this is the X-ray view of the leg. So this is the front view. We can see fibula, then the bottom tibia, and the top one is femur.
So this is Paleta. Just look at the side view. So we have fibula. The fibula has no connection with the knee joints. Now let us look at the ligament. The green in color is the ligament of the femur. Let us see the back view, left side view. How ligament is attached. Okay, now this is the X-ray view of the normal knee, and this is of the degenerated knee. The right side is of degenerated knee. तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे gap ज़्यादा हो गया. There is more gap lying in the right side X-ray. That means the ligament has tear down, and because of that, one side the gap will be more and knees will be bent to the other side. So here I am showing the normal joint too, and to the other side you can see that additional excess joint. Okay. Coming back to my slides. Now coming to the common knees problem and how to identify that you have a knee problem and what kind of problem you have. So there are very वैसे तो घुटना बहुत छोटा है देखने में, it's very small to see, but there are lot many problems and lot many name of the diseases associated with the knees. The first one is called as runner's knee. Runner's knee. It is associated with the patella. So that is the reason it is called as patellofemoral pain syndrome. PPS is the common name. What happens? While you are doing the squatting, या अगर आप उठक बैठक कर रहे हैं और आपके पटेला में दर्द हो रहा है, इसका मतलब आपके runner's knees problem है. How to check whether you have a runner's knees problems? तो आपको क्या करना है? उठक बैठक करना है. Squats. You do up and down, sitting on the knees. And if you have a pain in patella, that means you have runner's knee problem. Okay. So those who are having a knee problem, you can do squats 1 or 2 times and see कि pain कहाँ पे है. You have to pinpoint the pain in your knee. Then only we can find the solution to the problem. First, we have to identify the problem and then solution to the problem. So you are the doctor of yourself. Why I am sitting here? To teach you to take over the control of your own life rather than running to the various hospitals left and right and waiting throughout the day. The main purpose of this workshop is to make you aware that you should understand all your problems yourself. So if anyone has any doubt about runner's knee, you can ask here. Otherwise, I'll move on to the next problem. Okay, let's move on to the next problem. It is called as infrapatellar fat pad syndrome. Infrapatellar fat pad syndrome. IFPS. This is the other knees disease. तो इसमें क्या होता है, आपका जो पटेला है, जो नी कैप है, उसके जस्ट नीचे पेन होता है और वहां से लेके नीचे आपकी जो टीबिया है, शिन बोन है, वहां से आपके पटेला के नीचे से लेके पूरा शिन बोन तक आपको अगर पेन हो रहा है, I mean it will start from here and go in the shin bone, this part. Okay, here there is no pain. At the top side, there at the femur side, there is no pain. Only the pain exists below patella and the pain extending to the bottom side. Then you have infrapatellar fat pad syndrome.
Only for writing this problem, doctor takes your 500,000 rupees as a fees. So it is better to understand the things here itself. Now, coming to the next problem called as patellar tendonitis. Patellar tendonitis. So what happens here? Okay, I'll go back here and I'll tell you how to identify that you have intrapatellar fat pad syndrome. आपको कैसे पता चलेगा कि आपको IFPS है? तो आप अपने पैर को एक्सटेंड करेंगे, अपने टोज को कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड करेंगे, ऊपर नीचे, टोज अप एंड डाउन, टोज अप एंड डाउन. So while you are bringing your toes down, you will feel the pain in the shin bone. You will feel the pain in the shin bone area. That means you have IFPS. तो आप खुद से घर बैठे बैठे इस टेस्ट को कर सकते हैं. इसमें स्क्वाट करने की जरूरत नहीं है. सिंपली आप चेयर पे, बेड पे, कहीं भी बैठ जाइए और पैर के टोज को एक्सटेंड एंड रिट्रैक्ट कीजिए, डाउन एंड अप. Then you can identify whether you have the shin pain or not. Okay, next problem is patellar tendonitis. इसमें क्या होता है, आपका जो शिन बोन है इसमें कोई पेन नहीं है, आपका जो पटेला है इसमें भी कोई पेन नहीं है. द पेन लाइज टू द साइड ऑफ द पटेला, जस्ट बॉटम साइड ऑफ पटेला. ओके, हाँ जी बोलिए. यस वंदना जी, प्लीज स्पीक. Your voice is not audible. Well, Vandana ji. Anyone please confirm if I am audible? Yes, sir, audible. हाँ जी वंदना जी, please speak. Okay, you have this problem. Okay, I understand. Okay, fine. So now you can understand all your problems yourself. So this is called as patellar tendonitis. So this is very painful. And there will be a swelling over the tendons, left tendon and right tendon. So whenever we are doing any exercises or bending the knees, folding the knees and sitting in Sukhasana, or sometime you are folding the knees and again extending the knees. आपने काफी 10 मिनट तक आपने फोल्ड किया और एक्सटेंड किया है तो एक्सटेंड ही नहीं हो रहा है. And if it is extended for long time, अगर आप फोल्ड करना चाहो तो फोल्ड ही नहीं हो रहा है. That is the symptom of patellar tendonitis. There is a lot of inflammation, जलन होगी वहां पे. So this is how you can identify your problem. So you can see how many types of problems are there. So for every problem, there are different physiotherapy. But in allopathy, there is one medicine, that is painkiller. You just eat the painkiller, the pain will go away for a few hours, and again it will come back. Now, the next one is Osgood-Schlatter disease. ये डिजीज 9 to 14 इयर्स के एज में आता है, स्पेशली जब बच्चे प्यूबर्टी के एज में जाते हैं. So there are a lot of hormonal disbalances when a child grows into an adult. Especially ये उन बच्चों में होता है जो कि काफी एक्टिव होते हैं. They are actively participating in all the activities, physical activities, but they are not doing the proper activity under guidance, under expert guidance. Because of that, they will have imbalances in the tibia and femur. That's why during the childhood age, the coaches, the experts, the teachers are required so that they should give the correct direction. Otherwise,
children will suffer of this Usgod sclatter disease. What happens in this? इसमें आपके प्लैटर के नीचे जो आपका shin bone होता है यहाँ पे, it's a pinpointed pain here, which does not spread to the bottom or to the top or to the left or to the right. And whenever the child will sit and stand, he will feel or she will feel the pain below the patella. Okay, so this disease is not very common, but generally found during the puberty age. Okay, if anyone has any doubt, you may ask, I'll go ahead. Okay, so same one. This is a pinpointed pain. Next, meniscus tear. When the meniscus means the side ligament, menial or the outer one, inner one or the outer one. If there is any tear in the ligament, why tear happens? Because there is no proper liquid. Seminal fluid is not proper. और आपको कहीं झटका लग गया, आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, then also this tears can happen. Sometime it happens कि आप गाड़ी चल रहे हो, बस से चल रहे हो, ट्रेन से चल रहे हो, चलते हुए ट्रेन में आप जंप कर गए या चलते हुए बस में चढ़ गए, then also this meniscus tears can happen. चलती हुई गाड़ी से चढ़ना और चलती हुई गाड़ी से उतरना can also cause a meniscus tear. ओके, सो meniscus क्या होता है? आपके टीबिया के ऊपर का जो लिगामेंट होता है वो घिस जाता है. And because of that, there is a localized pain, pinpointed pain to the left side and the right side, inner side and the outer side. Side में केवल pain होगा. There will not be any pain to the front or at the rear. No pain at patella. जब आपको meniscus tear होगा तो आप घुटने को बेंड नहीं कर सकते. You can't bend your knees at all. बिल्कुल सीधा रहेगा घुटना. Bending the knees is like breaking the mountain. और अगर मोड़ लिया तो बस वो सीधा नहीं होगा फिर. Because there is a lot of pain when the upper ligament is rubbing with the lower ligament. Next, medial collateral ligament sprain. So this is a sprain which is caused because of the excessive physical labor or maybe physical exhaustion or maybe because of injury. Suppose you are running very fast and you lost the control, then you can have the sprain. Especially the weightlifters who are lifting the weight can have the sprain. Also, those who are having heavy weight, overweight people can have the ligament sprain. आपको पता है कि जब आपका आइडियल वेट सपोज 50 किलो है और आपने आइडियल वेट से 1 किलो वजन ज्यादा बढ़ा लिया है, तो नीज के ऊपर जब वो वेट आता है तो ये 4 टाइम्स हो जाता है, 4 kg. तो अगर आपका आइडियल वेट 50 है और आपने 60 किलो कर रखा है अपना वजन, दैट मीन्स you are putting 90 kg weight on the knees, 90 kg weight on the knees, 4 times more. अगर आपने शरीर में 5 किलो कम कर लिया है मीन्स आपने घुटने के ऊपर 20 kg वजन कम कर लिया है. कैन यू बिलीव दिस? So becoming overweight and obese is the major cause of most of the knee problems. This sprain also appears because of the aging. समय के साथ जब बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी ये कोलैटरल लिगामेंट स्प्रेन होता है. आपको पता है कि आफ्टर 35 देयर इज नो ग्रोथ इन द बोन्स. जो बोन बन गए वो बन गए. 30-35 के बाद कोई बोन के अंदर ग्रोथ नहीं होता.
But to maintain the consistency of the bone, वो कितना खोखला है या कितना भारी है, कैल्शियम की जरूरत पड़ती है. बट इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द प्रॉपर कैल्शियम, फुल डाइट, बैलेंस डाइट नहीं है, उसमें कैल्शियम नहीं है, तो आपका जो हड्डी है वो अंदर से खोखला हो जाएगा. एंड देयर विल बी स्प्रेन मोस्ट ऑफ द टाइम्स. थोड़ा सा चल लिया तो स्प्रेन हो गया, दौड़ लिया तो स्प्रेन हो गया. आपने कुछ लोग को ऐसा भी देखा होगा कि हर महीने स्प्रेन हो जाता है, कहीं से कहीं लेफ्ट साइड में स्प्रेन हो गया, कभी लेफ्ट राइट साइड में हो गया. तो द पीपल आर हैविंग लो porosity. The porosity of the bone is very low. That also causes a ligament sprain. Now coming to arthritis, most common problem that is found in the knees. So arthritis जो है एक जनरल टर्म है, जिसमें कि आपके घुटने में के अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, जलन होता है. क्यों जलन होता है? बिकॉज देयर इज अ टीयर, लिगामेंट टीयर. और लिगामेंट जैसे आपके हाथ में इधर खुरचा हुआ है, इधर आपका हाथ, और ये हाथ भी खुरचा हुआ है. अब ये दोनों खुरचे हुए हाथों का आप रगड़ेंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा, जलन होगी. The same thing happens in the knee also. When the top ligament and the bottom ligament tears away, then it causes the inflammation. अभी arthritis दो तरह का होता है. One is called as osteoarthritis and other is called as rheumatoid arthritis. दोनों को समझते हैं how they are different, osteoarthritis and rheumatoid arthritis. So osteoarthritis is the mechanical wear and tear on the joints. Mechanical wear and tear means that may be because of an accident, maybe because of lack of synovial fluid, maybe because of lack of balanced diet. That means आपका ligament wear हो गया, घिस गया. Whereas rheumatoid arthritis is an autoimmune disease, जो कि आपके शरीर में इम्यूनिटी की कमी से होता है, और इसकी वजह से आपके जो लिगामेंट होते हैं वो बीमार हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं. दे आर इन्फेक्टेड, दे आर नॉट वॉर्न आउट बट दे आर इन्फेक्टेड. उनके अंदर घाव हो जाता है, बिकॉज देयर इज नो इम्यूनिटी इन योर बॉडी. अगर इम्यूनिटी है तो क्या होगा? घाव हुआ भी तो बॉडी उसे अपने प्राण शक्ति से ठीक कर लेगा. बॉडी हैज द प्राण शक्ति, ऑटो इम्यून पावर to recover from all the disease, but it is only possible when you are giving a proper exercise, proper yoga, proper diet, then only your immune system will work out, otherwise it won't. वहीं एक और कंफ्यूजिंग टर्म है gout, जो कि किसी भी जॉइंट में हो सकता है, not specific to the knees, but it is caused by the accumulation of uric acid in the joints. ये आपके घुटने में भी हो सकता है, किसी भी ज्वाइंट में, उंगलियों के ज्वाइंट में हो सकता है, शोल्डर में हो सकता है, पैरों के ज्वाइंट्स में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. ये क्यों होता है? जब आपकी बॉडी, आपका इंटेस्टाइन अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो प्रोटीन यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एक्यूमुलेट होने लगता है. बिकॉज पैर सबसे नीचे पड़ता है, तो सबसे पहले एक्यूमुलेशन आपके टोज में होता है. योर टोज विल हैव द पेन. आपका जो आर्क है पैर का, फ्लैट फुट, सेंटर ऑफ द आर्क, वहां पे पेन शुरू हो जाएगा. जैसे आप उठेंगे सुबह, पैर आप रख ही नहीं पाएंगे जमीन पे, एक्सट्रीम पेन. दैट मीन्स देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड. प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो गई है, आपका पेट आपके प्रोटीन को पचा नहीं पा रहा है, या फिर जितना प्रोटीन आप ले रहे हैं वो जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं, तो उस केस में गाउट हो सकता है. सो इफ यू हैव गाउट इन द नीज, यू विल डेफिनेटली हैव द गाउट इन द टोज, क्योंकि टोज उसके नीचे है. तो सबसे पहला एक्यूमुलेशन आपके टोज में होगा, और फिर धीरे 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 ऊपर सारे जॉइंट के अंदर शुरू हो जाएगा. Okay, so now you can see here the differences between osteoarthritis and rheumatoid arthritis. So this is the healthy joint in which the ligaments, the top ligament and the bottom ligament are absolutely intact. यहाँ पे वियर एंड टियर हो गया है, लिगामेंट घिस चुके हैं, और यहाँ पे ये बीमार हो गए हैं, इनमें घाव हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है. सो दैट इज कॉल्ड एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस. देखिए किस तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस में वियर एंड टियर होता है, तो घुटना बैक व्यू किस तरह से दिखता है.
So those who are having osteoarthritis, मौसम बदलने के साथ ही आपके घुटने का दर्द भी बढ़ जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग एंड नाइट टाइम। जब मौसम ठंडा होता है तब आपके घुटने का दर्द बढ़ जाता है। दैट्स अ बेस्ट सिंबल, बेस्ट इंडिकेशन, सिम्टम कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है। इसमें आपके घुटने से आवाजें भी आती हैं। इफ यू आर ट्राइंग टू फोल्ड योर नीज, आपके घुटने से टक टक, क्लिक क्लिक, ग्राइंडिंग की आवाजें आती हैं। हाँ जी, बताइए। हाँ सर, मेरे घुटने में दर्द तो नहीं होता है लेकिन आवाज आती है। So you can feel that it is the early symptoms of osteoarthritis. सर नहीं, मतलब मैं बैठे ज्यादा रहती हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि घुटना, मतलब 2 घंटे में जैसे उठी हूँ तो अगर पैर झटकती हूँ तो टक टक की आवाज होती है सर। हाँ, और टक सर टक की मेरी आवाज घुटने से ही क्यों नहीं हो रही होती है? सर, मेरे तो मतलब हर जॉइंट से होती है ये। तो Okay, सर that's मुझे ये प्रॉब्लम है क्या? I can't say exactly कि आपको osteoarthritis है, but definitely there is a lack of fluid in the joints. Sphenoid fluid की कमी है। फ्लूइड की कमी होगी तो कुशनिंग नहीं होगा, देयर इज नो कुशनिंग। सर कैसे पूरी होगी ये कमी? आगे आ रहे हैं, आई एम जस्ट कमिंग अहेड। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज पेस एंसराइन बर्साइटिस। थोड़े से काफी क्लिष्ट नेम है इनके, बिकॉज मेडिकल टर्म्स में ऐसे ही होता है। सो नाउ दिस पेन डेवलप्स बिकॉज ऑफ अनगाइडेड एक्सरसाइजेस। आप एक्सरसाइज यूट्यूब में देख के कर रहे हैं या फिर 100 लोगों को देख के कर रहे हैं जहां पे आपको पर्सनल गाइडेंस नहीं है। अगर आपको कहीं पेन है तो कोई बताने वाला नहीं, देयर इज नो वन टू गाइड यू। बिकॉज ऑफ दैट there may be some jerks in your knees, some excessive load on your knees, that may also called anserine bursitis. और जब आप एक्सरसाइज उसके बाद करेंगे, it is will be very difficult to hold your pain. These kinds of problem are specifically found in women and those women who are overweight. women के अंदर overweight होने की वजह से भी anserine bursitis होता है। Where is the pain? The pain is localized here, below the patella, below the knees, at this point. Okay, and the pain will spread to the back side and the front side horizontally, not vertically. The pain will remain cocooned to this area alone. ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा, साइड में जाएगा, इधर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। So becoming overweight is very dangerous for knee pain. अगर आपको नी की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपना वेट चेक करना है, व्हाट इज योर आइडियल वेट एंड व्हाट इज द रियल वेट। नेक्स्ट इज इलोटिबियल बैंड सिंड्रोम। ये किसके साथ होता है? ये जनरली रनर्स, साइक्लिस्ट के साथ होता है, जो कि काफी देर तक दौड़ते हैं, काफी देर तक साइकिल चलाते हैं। उसकी वजह से जो साइड वाला आपका लिगामेंट है, साइड लिगामेंट, आउटर वन, गेट्स टियर्ड। ओके, तो इनर साइड में कोई पेन नहीं है, बट केवल आउटर साइड में पेन है, आउटर साइड में, then it is iliotibial band syndrome. Next is quadriceps tendinopathy. This pain develops to the side of the top of the knee, side of top of the knee. बाकी कहीं दर्द नहीं होगा, ये ऊपर के लेफ्ट साइड और ऊपर के राइट साइड में पेन होगा, then it is quadriceps tendinopathy. Next is polyteus strain Baker cyst, which is also called as calf strain. इसमें आपके घुटने के पीछे वाले जो मसल्स हैं, उसके अंदर अगर कोई स्ट्रेन हो गया है, काफ मसल्स जिसे कहते हैं,
that it is called as polyteus strain. आप पैर को एक्सटेंड करेंगे, टाइट करेंगे, पैर को पूरा टाइट करेंगे, और अगर आपके पीछे वाले मसल में दर्द हुआ, that means you have a calf strain or Baker's cyst. Okay, so this is mostly because of the accumulation of the excess fat in the body. बॉडी में अगर ज्यादा जरूरत से ज्यादा फैट इकट्ठा हो गया तो घुटने के ज्वाइंट में भी फैट इकट्ठा होता है, जो कि सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, गांठ में कन्वर्ट हो जाता है, और आपको पेन शुरू हो जाता है. Okay, these were the most common problems which are generally found in the people having the knee pain. So, how to cure all these knee pains? So I'll tell you that once you have the knee pain, there is no cure in allopathy. There is no permanent cure in allopathy. Because allopathy cannot give you the ligament. आपके जो ligament घिस गया उसे restore नहीं कर सकता. It can only be transplanted. नया ligament transplant कर दिया गया. But उसके success rate केवल 1% है. There is no synovial fluid. ताकि आपके घुटने के अंदर वो फ्लूइड डाल दिया जाए. There is no such fluid. So the best method to cure all the knee problem is physiotherapeutic healing through yoga and exercises. So there are different types of yogas, exercises, and asanas for different kind of problems. First, you have to identify yourself कि आपको problem कौन सा है. And based on that, the expert can suggest you some exercises through which you can get immediate benefit within 4 to 5 days. 25 to 50% benefit आपको 3 से 4 दिन में मिलना शुरू हो जाएगा. But to cure the entire problem will take up to 3 to 6 months, depend upon the damage of your problem. कितना damage हो चुका है. Because developing the ligament, again, birth of the ligament, rebirth of the ligament will take time. Formation of the fluid, which is to be natural only, will take time. तो कैसे होगा? Formation of the fluid is only because of your balanced diet. आप एक बैलेंस डाइट, वो डाइट जिससे कि आपके फ्लूइड फ्लूइड बढ़े, वही डाइट आपको लेना है, तभी आपका फ्लूइड जो है वो बढ़ेगा. So especially those food which is having natural oil, natural cholesterol, that will provide the synovial fluid in the joints. जो आपके ligament है, how you can build the ligament again. So when we are doing the exercises, then the body tissues secrete chemical fluids, also called as hormonal fluids. वो सारे hormonal fluid आपके ligament को rebirth करेंगे. Whenever we are doing yogas, exercises, asanas, mudras, bandhas, then automatically those fluids are generated, which takes care of your ligament automatically. That will heal your ligament within 3 to 6 months time. बहुत ज्यादा है तो 1 साल भी लग सकता है. But there is a permanent cure in yogic therapeutic healing. Okay, so the time required for healing, there is a permanent cure for healing in yoga, in yogic lifestyle, through 2 things. One is proper balanced diet and proper exercises, asanas under expert guidance. Because कहीं भी अगर इधर उधर हुआ तो हालत और खराब हो सकती है. If you are trying to do your own physiotherapy, looking at some YouTube videos, then it may be a problem. So it is better to consult any therapeutic or physiotherapist who can give you daily physiotherapy for 3 months together, which can give you customized time as per your own comfort. मॉर्निंग सेशन हमारे 2 सेशन है, 5 से 6 और 6 से 7, और इवनिंग का सेशन बच्चों के लिए और साथ में एडल्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं 6 से 7. ठीक है. फीस जो है ये आपकी है 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की और 1 साल की. ये हमारी फीस है. ठीक है.